Okay, students, let us look at this question. Average height of 22 toddlers increases by 2 inches when two of them leave this group. Now, if the average height of these two toddlers is one third the average height of the original 22, then the average height in inches of the remaining 20 toddlers is. तो यार एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन है एवरेज हाइट ऑफ दीज टू टॉडलर्स इज वन थर्ड द एवरेज हाइट ऑफ द ओरिजिनल 22 टॉडलर्स की जो एवरेज हाइट है वो लेट से मैंने 3x माना। ओके, सो द एवरेज हाइट ऑफ दीज टू टॉडलर्स, इनका जो एवरेज हो जाएगा दैट इज x। तो यार अगर 22 टॉडलर्स हैं, ठीक है, और उनकी जो एवरेज हाइट है उसको मैंने 3x माना है। सो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड द टोटल ऑफ ऑल 22 विल बी 66x। ठीक है, इसमें से यार अगर मैं दो टॉडलर्स का टोटल माइनस कर दूं तो दो टॉडलर्स की एवरेज x है, सो देयर टोटल विल बी 2x। Now, students, can I say this will be the total of 20 toddlers? Okay, this will be the total of 20 toddlers. तो अगर मैं इसको 20 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास 20 toddlers की एवरेज आ जाएगी। और 20 toddlers की एवरेज क्या होगी? It is given in the question. The average height of 22 toddlers increases by 2 inches, right? So if it increases by 2 inches, average of 20 toddlers will become 3x plus 2. So this should be equal to 3x plus 2. Now let's solve it, students. We'll get 64x will be equal to 60x plus 40. And this will give us, students, 4x will be equal to 40. That means x will be equal to 10. Now mind you, we are looking for uh, the average height of the remaining 20 toddlers. याद रहे 20 toddlers की average ये है. So answer will be, students, 3 into 10 plus 2, 32 will be the correct answer, which is option C.